Hello everyone, our today's topic is colonialism and urban change. Our first topic is urbanization in medieval India. So कहानी की शुरुआत होती है 6th सेंचुरी के पहले, जहाँ पे de-urbanization was like normal for the people क्योंकि political system was not working properly. फिर ग्रैंड एंट्री होती है दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स की, जिनकी बदौलत इंडिया में urbanization was on the peak. इन लोगों ने यहाँ पे they just set up for the manufacturing centers, trading centers, religious centers और किसी भी एक शहर को सिटी को एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक सेंटर बनाया जाता था और इसी के थ्रू दे वर जस्ट टेकिंग द टैक्सेस एंड दे वर पेइंग ऑफ फॉर द अदर फैसिलिटीज. गार्डन बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, रोड्स बना दिए. नाउ एट दैट टाइम इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट देयर, सो the other facilities were been given for the people. फिर बारी आती है 17th सेंचुरी की. 1707 डेथ ऑफ औरंगजेब. इनकी मौत के बाद आफ्टर हिज डेथ द मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू गेट स्कैटर्ड और इंडिपेंडेंट एंड सेमी इंडिपेंडेंट में बंटना शुरू हो गया. उसमें से थे कुछ इंपॉर्टेंट वाले बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर एंड किंगडम ऑफ मराठास. अबुल फजल नाम के शख्स ने हमें एम्परर अकबर के कोर्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई. ही इज़ प्रेजिंग हिज कोर्ट, ही इज़ प्रेजिंग फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन. ही गिव्स अस द इंफॉर्मेशन दैट देयर वर अराउंड 2800 टाउन्स इन द ईयर ऑफ 1594 और इन्हीं शहरों को 14th सेंचुरी में यूज़ किया गया था एज अ कमर्शियल ट्रांजिशंस एंड कंसिडर्ड एज अ इम्पोर्टेंट सेंटर्स. अब बारी आती है नेक्स्ट टॉपिक की, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि फ्लोरिशिंग इंडस्ट्रीज़, फिर बहुत सारी जगहों को अर्बनाइज किया गया था बाय द सल्तनत पीरियड एंड द मुगल पीरियड. बट प्रॉब्लम स्टार्ट्स हियर. दूसरे लोगों को अटैक करना था, इन्वेड करना था, कब्जा जमाना था. एंड वन ऑफ दोज पीपल वर नदीर शाह, अहमद शाह अब्दाली एंड कुछ लोकल ग्रुप जो इंडिया के ही थे, जिन्हें मुगल एम्पायर पसंद नहीं था और ख़ुद का एक एम्पायर सेटअप करना था. सो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट शहर और सिटीज गॉट डिवास्टेटेड, रैंसैक्ड वर दिल्ली एंड लाहौर. अब बारी आती है हमारे 1857 की, मगर कहानी शुरू होती है 1600 में ट्रेडिंग के पर्पज़ से. एंड दे स्टार्टेड टू रूल अस बाय द ईयर ऑफ 1858. तो 1857 में इंडियंस ने रिवोल्ट तो कर दिया, बट दे गॉट लॉस्ट, दे वर गॉट डिफीटेड बाय देम. और फिर बारी आती है क्वीन विक्टोरिया को एज ए टू मेक हर इम्प्रेस ऑफ इंडिया. सो आफ्टर दिस वॉर और आफ्टर द डिफीट द इंडियंस लैंड was got captured by the Britishers and it was got used as commercially to grow the raw materials. और इन्हीं रॉ मटेरियल को उनकी कंट्री में बेच के ब्रिटेन में भेजने के बाद इट वाज गॉट मैन्युफैक्चर्ड और यही वापस ये गुड्स वापस हमारी इंडिया में बेचे जाते थे. इससे प्रॉब्लम ये हुआ that local industries were got crashed, textile industries were got ruined, लोगों का काम छीन गया. लोकल जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे they were completely got bankrupt because of this. इसके बाद आती है बारी हमारी फेमाइन की, बंगाल फेमाइन इन द ईयर ऑफ 1943, जहाँ पे 30 lakh people they lost their life. With the entry of the Britishers, many of the cities lost their importance to new one. टाउन्स एंड सिटीज़, इनका कन्वर्जन स्टार्ट होना शुरू हो गया. दे वर कन्वर्टेड इनटू कमर्शियल एंड ट्रेडिंग सेंटर्स. कैपिटल टाउन्स में कन्वर्ट हो गए, पिलग्रिमेज सेंटर्स में कन्वर्ट हो गए. द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन एंड डीअर्बनाइजेशन, ये प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन द राइज एंड फॉल ऑफ द किंगडम. ओके, अगर राजा मजबूत है देन ऑब्वियसली इट विल बी लाइक अर्बनाइज्ड, एंड इफ द किंग स्टार्ट्स टू लूज हिज ग्रिप देन इट विल बी गॉट डीअर्बनाइज्ड. De-urbanization and urbanization in colonial India. So बारी आती है who was the first who came to India? Portuguese with the purpose of trade. Then Dutch. Then French. Now French people were been sent by the Britishers. Now all these are Europeans. Imperialism मतलब किसी पे rule करना with the powers, and Renaissance means to spread the culture, to spread the art, to spread the language. That is called as a Renaissance. इसमें कुछ जगह थी like Cochin, Goa, Daman and Diu. This was under the Portuguese. And Chandernagore,
Pondicherry. This was under the French. But as the French started to get betrayed, उन्होंने प्लान कर दिया इंडिया में सेटल होने का. British got angry, फिर आ गए उनसे kinetic war. They had a kinetic war with them and they kicked them out. Portuguese उनके साथ ट्रीटी साइन कर ली, गोवा मिल गया उन्हें और बाकी का एरिया मिल गया ब्रिटिशर्स को. To control India on the western side, the Britishers, they made a plan to make a new naval base, that was the Bombay, on the seashore, on the coastal line. And there was like to shut down for the Surat market as it was being run or controlled by the Indian people, the merchants and the traders. So once the headquarter of East India Company was been set up, Surat lost its prominence and control on the Indian market. अब चलते हैं कलकत्ता की तरफ और जानते हैं हाउ ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड फोर्ट विलियम टू फोर्टिफाई, टू मेक इट स्ट्रॉन्ग, टू मेक इट ड्यूरेबल, टू इंक्रीज देयर पोजीशन, देयर कंट्रोल इन कलकत्ता. और उसी के साथ बैटल ऑफ प्लासी के बाद कलकत्ता वाज कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी. इसके साथ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के चलते हुए द गवर्नर ऑफ कलकत्ता वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर मेड सब सर्वेंट टू हिम. सो दे वर लाइक अ पपेट अंडर द मेन गवर्नर. और कलकत्ता वाज रीनेम्ड एज द ब्रिटिश कैपिटल टिल 1911. Some important cities lost their importance. The process of deurbanization began. The British policy of ruining the traditional Indian economy also led to deurbanization. However, the British patronized some urban centers to suit their imperialistic and industrial needs. और उसी में से कुछ थे बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता. इन्हीं जगहों को यूज़ किया गया था एज a strategic location and to connect the whole nation. तो traveling easy, industrialization easy, railway routes will be easy, and the most important, to carry the goods from India to the country became more convenient and smoother transaction. Surat is famous for the textile industry by the year of 2023 too. But during the British's time, the Masulipatam and Surat were considered as the most important port town. The East India Company set up their first factory in India in Masulipatam to make their work more convenient, more easy, and to get more profit. Let's talk about now hill station. The Britishers, they were like Europeans in their country, the cold climate, and to get set up in India, the Britishers moved toward the northeastern side with a favorable climate, and they set up for the hill stations Mussoorie, Shimla, Darjeeling, Ooty, and Dalhousie, and their summer capital was Shimla. Let's talk about now tea and coffee. तो टी होती थी नॉर्दर्न साइड आसाम एंड कॉफ़ी वॉज गेटिंग कल्टिवेटेड इन द सदर्न पार्ट केरला. To do the farming, they needed the workers, so the migration of the Indian people was got started and the colonies were got set up. अभी इन कॉलोनीज का ध्यान रखने के लिए कैंटोनमेंट वॉज गॉट स्टार्टेड, इट वॉज गॉट सेटअप आर्मी कैंटोनमेंट, और कुछ ऐसे कंटोनमेंट्स थे मेरठ, कानपुर एंड लैंसडाउन में. और नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन. Abundant source of raw material in India, but Britishers were not able to utilize it, so they made a plan to set up the tracks, railway tracks. The first railway track was set up in the year of 1853 from Bombay to Thane. इससे हुआ ये कि रॉ मटेरियल शिफ्ट करना आसान हो गया. फ्रॉम द सोर्स एरिया रॉ मटेरियल शिफ्ट किया जाता था पोर्ट की तरफ और पोर्ट से शिप में भेजा जाता था इंग्लैंड. इसी के साथ रेलवे सिस्टम की वजह से इंडियन पीपल दे स्टार्टेड टू गेट द एम्प्लॉयमेंट. देन एक अंधविश्वास की जो कंसेप्ट रहती है सुपरस्टिशंस की, तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी सामने आने के बाद पीपल स्टार्टेड टू गेट एजुकेटेड as they were traveling together with each other to the new places. In modern time, we use the WhatsApp, all the social medias to send the messages. In the olden time, they were like a postal service. और उसी time का एक modern method था telegraph, which was got invented or introduced in the year of 1853 और first line connect की गई थी कलकत्ता to आगरा. इसी के साथ ब्रिटिश एम्पायर को और मजबूत बनाने के लिए लॉर्ड डेलहाउसी ने पोस्टल स्टैम्प्स
को भी इंट्रोड्यूस किया, जिससे ऑन विच द क्वीन इमेज वाज देयर, उनका काम करने का तरीका कैसे रहता है, दैट वाज गॉट प्रिंटेड एंड इट स्टार्टेड टू गेट सर्कुलेटेड ऑल अराउंड द कंट्री। एज वी हैव सीन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो हम बात करें अगर उसके पहले कि, तो ब्रिटिशर्स ऑलरेडी स्टार्टेड टू मेक द चेंजेस इन द सिविक। इसमें आता है जैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय देम, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट्स, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, पार्क्स एंड प्लेग्राउंड, स्कूल्स, और बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए। दे वर मेनली फोकसिंग ऑन द सिटी एरिया, लार्जर सिटीज़, जहाँ पे उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से बना रहे, बट दे वर नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स द रूरल एरियाज़। वहाँ से सिर्फ टैक्स कलेक्ट किया जाता था एंड दिस वॉज गेटिंग यूटिलाइज ऑन द अर्बन एरियाज़। तो इसकी शुरुआत हो चुकी थी 1881 से ही, बट एज सम ऑफ द इंडियन पीपल डिडंट लाइक इट एंड देयर वाज अ रिवोल्ट ऑफ 1857. Our next topic is local government. As per the Cornwallis Code 1793, British government made a plan, or they decided to hand over the administrative powers to the revenue collector of district. और रेवेन्यू कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम था लोकल लेवल पे लोगों को कंट्रोल करना या उन पे नज़र रखना, उनके पास से डिटेल्स कलेक्ट करना, टू कलेक्ट द रेवेन्यू टैक्स एंड टू हैंड ओवर ऑल दीज टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो एक तरह से ही वॉज लाइक अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट. We have already seen for the Sultanate people, Mughals, how they set up for the good administrative part. So, on behalf of the Britishers, Lord Cornwallis established for the first time a regular police force to maintain law and order. The Indian Penal Code was set up or drawn up in 1860 under Lord Macaulay. और इसी के कोड के तहत पुलिस एक्ट वॉज सेटअप इन 1861 और बहादुर शाह जफर इनकी डेथ होने के पहले ही इन द ईयर ऑफ 1861 सारे पावर्स ट्रांसफ़र किए गए थे फ्रॉम मुगल सिस्टम टू ब्रिटिश राज. एंड आफ्टर दिस in the year of 1862, November 1862, Bahadur Shah Zafar died. The final conclusion of the chapter is that how Sultanate people, Mughals, Portuguese, Dutch, French, Britishers, as being outsiders, they ruled on us. और ये गलती थी इंडियंस की, that they were not ready to work together in a unity, easily getting distracted, and finally we got ruled since 6th century to 18th or by the end of 18th century. और 19th century आने तक we were got completely bankrupt.